रेकोडिक का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। रेकोडिक का आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूँ फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास जुरिस्डिक्शन होता, हम वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मामलों को ठीक रखने की कोशिश की, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए, इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना आए। जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए, मैं अब वजाहत कर दूं। अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें। मैं ये मेरा मकसद ही नहीं है। आप एनीवे मैं ये आंसर कर दूंगा। ये बिल्कुल 184(3) के जो कंडीशंस हैं वो भी मैं आपके सामने पूरी कर दूंगा, और वो दो कंडीशंस हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में जी राइटली साइड से अगर we can go back, independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is your? You have read the law now. इसके ऊपर आप बता दें कि. और इसमें इसी के साथ एक सवाल ख्वाहिश साहब, इधर हूँ जी, जरा 5 मिनट लगते हैं आपको मुझे देखते। नहीं सर, आप उसमें मैं आपसे सिर्फ इसी सवाल चलते हैं कि इस 4 में लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा जजेस का बेंच बना सकते हैं ना, तो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं ना 4 में। तो फिर 4 को 5 को इकट्ठा पढ़े तो अगर फुल कोर्ट बन गया तो फिर उस केस में अपील नहीं होगी। बस आप इसका भी जवाब दीजिए। बल्कि इसमें एड ऑन क्वेश्चन होगा कि डज दैट नॉट मीन कि हम फिर वंस अगेन खुद ही डिसाइड कर लेंगे, जहां हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे। डज दैट अगेन नॉट अमाउंट टू अ पावर being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. एक क्वेश्चन और भी इसी में ऐड कर लेते हैं इस तरफ, फाजी साहब, टू योर राइट। हम ये भी देखेंगे through this petition there is an order of this court, the act has been suspended, whether in presence of that order full court can be constituted or not, ये भी जरा देखें। court can be constituted or not। आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम shall we proceed to the next council? फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए, ठीक है। मैंने तो प्रपोजिशन कर दी, ठीक है। आप आइए, कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट? अच्छा, आप अपना किस पिटीशन में जरा बता दें। तीनों में ख्वाहिश साहब के साथ जी, तीनों में ख्वाहिश साहब के साथ। To write of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 में and 6 हम बैठे हैं, एक में आप 7 में मेरी हाजिरी हो गई जी। चलिए बताइए। Well, the proposition requires to be refocused. There is the fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments, I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes... मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For instance, let's take income tax ordinance. ठीक है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास, ठीक है।
हम क्यों जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें 184(3) की? ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है, ठीक, मगर बुनियादी सवाल 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीजें हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया, दूसरे वाले में तो आप बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे। आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन, फिर आप हमारे पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन में आते, हमारे बात बहुत खुले होते। अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है, 184(3) का इंतखाब किया है। My lord, there are number of judgments of the Supreme Court. जजमेंट्स हावी नहीं होते हैं आइन पे। अच्छा, आप 189 पढ़ लें जरा, ये आप लोगों के जरा गलत फहमी क्यों है? 189, एक सेकंड, 189 पढ़ लेते हैं साथ में, जरा पढ़िए 189। जी, Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in Pakistan. लफ्ज है ऑल अदर कोर्ट्स, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। Yes. तो ये हमें हमारे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट्स ना साइड कीजिए। अब आपसे आईनी सवाल पूछा जा रहा है, ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, व्हिच मींस हाई कोर्ट्स एंड Unless your lordship allows me to make a submission, अदर कोर्ट्स I की बात will कर not, रहा हूँ। no, I will not be able. ठीक है, I, आपको सवाल दे दिया, आप जवाब दीजिए जैसे भी आप करना चाहें। Please, lordship. If I may ask Ji. you, Sir. Mr. Siddiqui, if I may ask you a question. Please, It lordship. seems to me that Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. But there is also within the Supreme Court and in each High Court what is called horizontal stare decisis, the law of precedent. That is a judge-made law, that is case law. That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are there not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full court gives a judgment. If there were no horizontal stare decisis, a two-member bench of the Supreme Court would say, well, Article 189 doesn't apply, so we are not bound by the judgment of the full court. Would that be correct? Would that be a correct understanding? That of would be a constitutional law? fallacy, it will not be correct. So if a three-member bench, a five-member bench gives a judgment, can a three-member bench say, or even a five-member bench say, sorry, we are not bound because Article 189 doesn't apply to us? Surely horizontal stare decisis does apply. It's a well-settled. What would you say to that? But I would make a humble submission that the judgments of the superior courts, particularly of the Supreme Court, are a binding precedent on the subsequent courts constituted as a benches or a full court, and unless your lordship, in your lordship's wisdom, decide to overrule them, they have a binding value, and it goes to the very system of certainty within the judicial system. And to say that your lordship are not bound by the previous judgment